Vaibhav, go ahead first. Okay, sir. Am I audible, sir? You are. Okay. Okay, sir. I'll start. Very good morning to all of you. I'm Mahajan Vaibhav Mansaram. I'm from Akola, Maharashtra. Akola is a place which is situated 250 kilometers away from Nagpur in west. I have done my schooling from my native place only. Then I've done my graduation from Sinhagad College of Engineering, Pune in mechanical engineering. This college is affiliated to Savitribai Phule Pune University. After that, I've completed my post-graduation from NIT Rourkela in production engineering specialization, from where I've got placed in a pharmaceutical firm where I've worked as a production engineer. After that, I've started working for a manufacturing firm named Technomex Industries. It is situated in Chinswad MIDC in Pune, where also I'm working as a production engineer from last 8 months. As a production engineer, my key responsibilities are first of all, selection of the job, priorities from the PPC report, then allotment of the job according to the criticality of the drawing and the skill level of the worker. Then second responsibility is to checking the availability of the resources, whether the resources are available with us or not, whether it may be a raw material, tools, gauges. And third, that if the programmer is not available, I need to write the program and feed it to the machine with the help of the worker. That's all about me, sir. Okay, Vaibhav, how long you are working? Your job experience कितना हुआ तुम्हारा? It is around 18 to 20 months, sir. अच्छा, मेरे को simply ये बताओ कि 18 months में what is your contribution to the organization? My contribution to the organization, that it is very well known that in our manufacturing MSME section, basically, I'm working for an MSME. So the level of standardization or the level of working is at very basic level. So for improving it, we need some qualified people, both in technical and management level. So we can improve this manufacturing zone for somewhat at higher level or a very standard level. I'm talking in terms of the production, how is it happening, whether it is happening in a proper manner or what, the proper sequencing has been following or not, or the proper procedure is following or not. So that's my contribution towards the company. Okay, so you talked about the resources you are handling and all. My first question is what kind of resources you are talking about here? And second is how do you optimize the use of resources? Okay. The resources are three types: man, money, and machines. So all the three resources are available with me. Then in order to optimize it, one can go for many number of processes. Means for a product, means operation research processes I'm talking about, that you can go for any kind of analysis and project management techniques, optimization techniques or tools, so that one can use your resources as very optimum level, whether it will be a raw material. Are you using some software, Vaibhav, to optimize the resources? Yeah, currently I'm not using, but I have an experience to use the ERP software. This is Enterprises Resources Planning. It is nothing but the integration of all the departments. ERP is a platform which is going to integrate all the departments. For example, it is store, the store design department, production department, or packaging department, or customer service department. So it will provide a platform for us so that we can arrange our inventory, arrange our production or the process or the flow of material. So, and each and everyone can communicate in a very easy manner. So but I have heard that using ERP is not easy for unskilled people. Am I right in that? Or can any unskilled laborer can also use ERP? We can make him to work. Means it is not so much hard. Means you just need to find out the things and whether the product is currently achieving. I can explain this with an example. Consider that some part is missing. Means there is some sub-assembly part in your product is missing. So one can find out this, that how, means where it can be. So first of all, it will
that product, the main assembly of its part must having a number, so you can find out the number in ERP software that whether it is actually situated, means where it is in production department, in design department, or it has gone for packaging department. So from where we can find, first of all, estimate that where the exactly product is, and from where one can find out that the where that part of its, or where the assembled part of it is actually means present today, or actually situated. So it is easy to handle if we can train the unskilled or the semi-skilled worker. What is MRP? MRP is material requirement planning. It is done. It is a combination or a scheduling, or it's a combination of MPS, bill of material, and inventory register. So these three inputs combinedly together form an MRP. So in which we are going to first of all decide that what we need to produce and where need at what quantities need to be produced, and where at what time we need to start the manufacturing. Means, okay, Vaibhav, I have a question for you. Tell me, like, how do you think NITIE is going to help you? You are already doing good in industry. Okay, sir. As I am a somewhat technically means bent towards a technical domain, so I have found that in order to excel in the career, or in order to improve more in the career, some kind of industrial or management level of skills are required. So NITIE is going to me provide a platform in order to develop my skills. I'm talking about those skills like communication, presentations, group task, or leadership quality. So this all these things will be provided in the NITIE, as NITIE has defined its structure, course structure like that. So that's what that's why I'm thinking that NITIE will be a good platform for me to achieve excellence in my career. Okay, so Vaibhav, let me now give you feedback. I give you 7 out of 10, right? Okay, Let me tell you your strengths and weaknesses. पहले तो मैं आपके प्रेजेंटेशन लुक्स पे आता हूं, तो मेरे को आपका वैसे तो टाई और शर्ट वगैरह परफेक्ट है, दिस इज वेरी गुड. एंड आपका ये जो हेयर है, ये हेयर स्टाइल मेरे को लग रहा है बाल थोड़े से खड़े हैं, जिनको बैठाया जा सकता है. अगर आप छोटे कटवा सकते हो इस सिचुएशन में, आई डोंट नो वेदर कोविड सिचुएशन में इट इज पॉसिबल और नॉट, बट इफ यू कैन गेट इट डन और यू कैन सेटल इट लिटिल बिट. तो हेयर स्टाइल है. पीछे बैकग्राउंड में जो तुम्हारा कर्टन लगा है, दैट इज क्रिएटिंग डिस्ट्रैक्शन फॉर द इंटरव्यूअर. तो उसमें प्लेन अगर रहेगा, ब्लू कलर का रहेगा तो बहुत अच्छा लगेगा. पीछे अगर ब्लू मिल जाए आपको, ब्लू बैकग्राउंड और व्हाइट शर्ट एंड दिस, इट विल बी परफेक्ट फॉर यू इफ यू कैन मैनेज दैट. बाकी आपने अपना जो बोलने वाला स्टाइल है वो इसको ऐसे पकड़ के नहीं बैठना है, कुछ ऐसा सिस्टम बनाओ कि आपके हैंड्स फ्री रहें. एंड मे बी इफ यू कैन यूज द वो हेडफोन होता है, तो ऐसे ये वायर ना लटकी हो, तो दैट विल लुक लाइक गुड. और अगर जैसे मैं भी लैपटॉप पे बात कर रहा हूँ विदाउट एनी एड, लिसनिंग एड, तो दैट विल परफेक्ट इफ यू कैन डू दैट. बैठना जो है आपने वैभव थोड़ा सा आगे की तरफ इंक्लाइंड होना है, 10-15 डिग्री मेरी ओर को इंक्लाइंड हो थोड़े से आप, something some little more, little this no, not this much, थोड़ा सा इंक्लिनेशन, जैसे मैं ऐसे कर रहा हूँ, जैसे आप पीछे हो जाओ और थोड़ा सा आगे की तरफ इंक्लाइन, ऐसे ऐसे पीछे की तरफ. नहीं, अपना आप गर्दन नीचे मत करो, डोंट टेक योर दिस थिंग, बट जैसे अभी आप पीछे की तरफ बैठे हो, मैं चाहता हूँ कि 90 डिग्री पे ना बैठ के 10 डिग्री इंक्लिनेशन टुवर्ड्स लैपटॉप, 10 डिग्री इंक्लिनेशन टुवर्ड्स लैपटॉप. एंड हैंड मूवमेंट्स, हैंड को अपने चेयर पे नहीं रखना है, अपनी आर्म्स को चेयर पे नहीं रखना है, इनको फ्री छोड़ो, सो दैट वो आपके शोल्डर ऊपर नहीं जाएंगे, शोल्डर नीचे की तरफ आएंगे. अपने अपने हैंड्स को जरा लेग्स के ऊपर रखो, हैंड्स को लेग्स के ऊपर रखो, और थोड़ा सा इनको फ्री लटकाओ, थोड़ा सा अपना फ्री करो अपने हैंड्स को. दिस इज हाउ यू हैव टू बेसिकली सिट प्रॉपर्ली. तो वो सिटिंग पोस्चर में आपको ये इंप्रूव करना है. योर बॉडी इज अदरवाइज रिजिड काइंड ऑफ बॉडी. रिजिड मींस के जैसे एक बॉडी पोस्चर होता है ना, फ्लेक्सिबल नहीं होता बहुत, आपका रिजिड टाइप है, तो आपको वो थोड़ा सा मैनेज करना है. एक अब मैं आता हूं आपका ड्रेसिंग एंड मैंने वो जेस्चर पोस्चर बता दिया. अब मैं आपका आता हूं आपके जॉब एक्सपीरियंस के बारे में. देखो, नॉलेज यू हैव, लेकिन उस नॉलेज को आपको और ज्यादा एक्यूमुलेट करना है, वही तुम्हारी स्ट्रेंथ है. तुम्हारा नॉलेज एंड जॉब एक्सपीरियंस तुम्हारी स्ट्रेंथ है. यू आर स्टिल डूइंग जॉब. नहीं, मतलब अभी सर एक्चुअली कोविड के वजह से हुआ क्या है कि वो जो मतलब कोई काम पे नहीं आ रहा है या लोडिंग का प्रॉब्लम है, तो फिलहाल मैंने छोड़ दिया है. मतलब तो अगर बाद में, अगर मैं ऑनेस्टली बता देता हूँ सर, अगर नहीं हुआ मेरा कहीं नीति में या कहीं IIT में इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट कोर्स में, तो मैं फिर से ज्वाइन कर लूंगा. तो कैन वी से इट इज वर्क फ्रॉम होम?
नहीं सर, वर्क फ्रॉम होम तो मेरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि तो मुझे फिर वहां जाके तो फिर मुझे क्या वहां जाके वहां पे क्या बोलना है मेरे को ये बताओ ना, अकॉर्डिंगली वी प्रिपेयर। सर मतलब मैं तो ये कहूंगा कि मैंने फिलहाल छोड़ दिया है, ऐसा ही फिलहाल कहना छोड़ दिया चाहता नहीं चलेगा, छोड़ दिए या नहीं छोड़ा यही चलेगा। हूँ। हाँ छोड़ दिया है, ऐसा ही कब कंसिडर छोड़ा, करके चल। कब छोड़ा? पिछले हफ्ते ही सर। सी वैभव, वी बी वेरी क्लियर कि कब छोड़ा, यू नीड टू बी वेरी क्लियर। पिछले हफ्ते सर, पिछले तो वो हफ्ते, पूछेगा क्योंकि पिछले हफ्ते क्यों छोड़ा, निटी का लिस्ट आने के बाद हाँ छोड़ा वो क्या? हाँ नहीं, तो माने मैं वही बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने मतलब ये देखा था कि अभी स्कोर पुणे कितना है, मेरे में को स्कोर बताओ अपना कितना है तुम्हारा। मेरा 710 है एससी कैटेगरी में। 710 एससी कैटेगरी में, तो देखो प्रोबेबिलिटी तो है सिलेक्शन होने की, जी। राइट? हाँ तो क्या बोल हाँ, सकते हैं हमने क्यों छोड़ दिया? तो यही कि मुझे मैनेजमेंट या इंडस्ट्रियल लेवल पे काम करना अभी था। क्यों, एक वीक पहले क्यों छोड़ा, दैट इज द क्वेश्चन आई एम आस्किंग। मेरा मेन रीजन तो ये है क्योंकि काम नहीं था नहीं एमएसएमई। वो नहीं बोलेंगे हाँ हम। लेकिन मुझे ये बोलना नहीं है। हाँ वो नहीं बोलेंगे, मैं उसी की तैयारी करवा रहा हूँ। कैन वी से 1 मंथ बिफोर मैंने छोड़ा? नहीं सर, क्योंकि वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पे डेट आएगा और मुझे वहाँ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सबमिट करना ही होगा, मैंने उन लोगों से बात की है। तो एक वीक ही बताना है। हाँ एक वीक ही ओके बताना है ठीक है। लेकिन। ठीक है, फिर वैभव सुनो, अभी आंसर क्या करना है। आपने बोलना कि सर आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर निटी बॉम्बे सिंस लॉन्ग। अच्छा, एक आपने प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में बीटेक किया, राइट? हाँ नहीं, बीटेक मैकेनिकल में किया है, मास्टर्स मैंने स्पेशलाइजेशन किया है एनआईटी राउरकेला से। आपने प्रोडक्शन में किया है या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में किया है? नहीं नहीं, प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन में आपने किया है, तो उसको हाँ भी जी। थोड़ा सा हाईलाइट करना। आपने बोला कि सर जब मैं प्रोडक्शन में इंडस्ट्री में था तो मैंने डिसाइड किया था कि मेरे को निटी बॉम्बे आना है। वो ये क्वेश्चन भी पूछेगा कि एमटेक ऑलरेडी कर चुके हो तो आप दोबारा क्यों करना है। हाँ बोला सर उसका टेक्नो, आंसर, हाँ हाँ लास्ट हम, टाइम आपने दिया था वो लिख ठीक के रखा है मैंने। है डन। तो अब हम ये बोलेंगे कि सर मेरे को निटी से एक्सपेक्टेड था कॉल, तो मेरा स्कोर इतना था कि मेरे को कॉल आ जाता, राइट? बट आई वाज वेटिंग फॉर द कॉल एंड आई हैव टोल्ड, मतलब मैंने इंडस्ट्री में बता रखा था कि मेरे को निटी के लिए जाना है। तो आई वाज वेटिंग फॉर द लिस्ट टू कम, सो द मोमेंट लिस्ट केम आई सबमिटेड माय पेपर्स। तो इसका एडवांटेज मिलेगा तुम्हें, उनको लगेगा लड़का नौकरी नौकरी छोड़ दी अब तो उसको लेना ही पड़ेगा। यू अंडरस्टैंड? मतलब नॉट हाँ दैट वे, बट यू नीड टू कन्विंस देम कि सर फिर वो बोलेगा अगर तुम्हारा निटी में नहीं हुआ तो क्या होगा। बोला सर आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई कैन मेक इट अप, but still in the worst case if you don't get it, then I will try next time again to remove my these shortcomings and I want to get into NITIE sir। ऐसे बोलना है आपने, राइट? जी। आपने बोल दिया कि मैं वेट करता रहा, लिस्ट आएगी तो मैं छोड़ूंगा। फिर जैसे लिस्ट आई तो आई सबमिटेड माय पेपर्स। दो मैंने अपने बॉस को बता रखा था सर लॉन्ग बैक, व्हेन माय गेट रिजल्ट केम, तब मैंने बता दिया था कि मेरे को निटी से कॉल आ जाएगा। एंड दैट टाइम बिकॉज वर्क वाज गोइंग ऑन इन इंडस्ट्री, सो ही रिक्वेस्टेड मी टू पुल एज लॉन्ग एज आई कैन। सो अभी क्यों छोड़ा एक वीक पहले? दो चीज हुई, एक कि निटी का रिजल्ट आ गया एंड यू वांटेड टू प्रिपेयर रियली हार्ड, सो यू कुड नॉट हैव गॉन टू ऑफिस। सेकंड, ऑफिस में अ न्यू प्रोजेक्ट वाज कमिंग and I was to get involved into that project, but I could not have done that because अगर मैं नीटी में ज्वाइन कर जाता हूं तो फिर वो प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट छूट जाएगा। तो दैट वाज अनदर रीजन। तो ये दो चीज हुई कि मेरे को लास्ट वीक छोड़ना पड़ गया, समझ गया आप? एक तो हुआ कि लिस्ट आ गई, और लिस्ट आ गई तो आप पहले ही छोड़ने को, आपको तो आप पहले छोड़ने को तैयार थे, लेकिन आपके बॉस ने बोला कि यार एक काम चल रहा है इस पे, अभी तो तू थोड़ा सा कॉपरेट कर। तो मैं कॉपरेट करता रहा, तो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया थैंकफुली 1 वीक बिफोर। और 1 वीक बिफोर ही मेरा जो है वो लिस्ट आई, और अब एक नए प्रोजेक्ट में मेरे को इन्वॉल्व करना पड़ेगा अपने आप को इफ आई कंटिन्यू। बट देन इफ आई डिसकंटिन्यू तो प्रोजेक्ट में डिसरप्शन आएगा। तो ये दो तीन फैक्टर आप याद करो वैभव, एंड अकॉर्डिंगली वी जस्टिफाई। डन इट? ओके, बाकी द रेस्ट इज ओके। हाँ, एक पेक्यूलियर ट्रबल है तुम्हारे साथ कि जब तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना नेक्स्ट, तो तुम थोड़े से उस टाइम पे हड़बड़ाते हो और थोड़े रुकते हो, वो फ्लो नहीं मेंटेन कर पा रहे हो। नहीं मैं रुक के सोचता हूँ कि शुरुआत कहाँ से लेकिन करूँ। सोचने का तरीका गलत है, वो उस पर वर्कआउट करो। जी। अच्छा, ऐसे करते हो तुम, अच्छा ओके, ऐसा नहीं करना। जैसे क्वेश्चन पूछेगा तो तुम्हें रुकना, सोचना है तो थोड़ा रुक जाओ, बट डोंट स्पीक एनीथिंग एट दैट टाइम। वो थोड़ा ऑब्जर्व करना आप। जैसे कोई क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ तो जो तुम रुक रहे हो उसमें थोड़ा सा इशू है, उस पर वर्कआउट करो वैभव, राइट? डन? ओके। ओके।